Hi everyone, Pranam. We'll start the class. Sadashiva-samarambham Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-paryantam Vande Guru Parampara. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpada Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Padarayanam Sutra Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha. Sahana Vavatu Sahanau Bhanaktu Sahabhiryankaravavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Everyone, namaste. We are seeing, we've completed verse 22. Yes. So, trying to understand, appreciate how this consciousness that we experience is truly independent of the qualifications that we attach to it. I'll repeat this. Shastra is trying to tell us how consciousness that we are experiencing, how this consciousness is independent of the qualifications we attach to it. What I mean to say would be consciousness we experience. First part of the sentence. We have no doubt about that. I'm conscious. I'm awake. I'm alert. I'm conscious. I also know who is not conscious. The table is not conscious. The wood is not conscious. Stone is not conscious. So, who is conscious? The one who expresses ahankara vritti. Aham karta.
जो अहम कह सकता है, मैं जो कह सकता है, वो कॉन्शियस है. Any animal, any bird, any insect, they are all pranis. They all have a sense of identity. All of us living beings are conscious. This conscious experience that we experience ourselves as conscious. What is the nature of this consciousness? I'm sticking to the word consciousness purposely today. We all know it is not an equivalent of Atma in explaining. Just using it to help us appreciate immediately, locate in our experience what the Shastra is talking about. Atma word somehow we are not able to identify immediately. But the minute we say conscious, tick, 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 I know starts to happen. What is consciousness? I know I'm conscious. This consciousness is independent of all that I qualify it with. यही बस तात्पर्य है that Shastra wants to drive in our minds. This consciousness is my experience, but I do not know its true nature. That it is independent also. This I somehow am not able to know. I don't know. I only know consciousness as I am conscious. I am conscious में कौन है I am, this name, form, age, gender, etc. So consciousness to me is never known as independent of these qualifications. I am always supporting, or rather appreciating consciousness only when it has a tag afterwards. मुझे consciousness की truly value भी नहीं है, पता भी नहीं है. कब पता चलती है इसकी value? When our life is threatened, or when someone close to us, their life is threatened. The value of consciousness is suddenly magnified, or it comes to our mind's perception. Day-to-day life, when things are going in a stable way, to some extent, consciousness is not the topic of my inquiry. I do not know, I don't pay its due value, I do not give it the attention to know what its nature is. क्या ये consciousness सिर्फ मेरे जागने पे एक्सप्रेस हो रही है? That's a question. Is it only felt when I'm awake? क्योंकि यहाँ तो I am conscious. I'm not inert. And I also know the stone is not conscious. Stone is inert. But this is when the sun is there, it's come up until it rests, till I slowly drowse myself into a
sleepy mode, and then slowly, my own sense of who I am is not contactable to me. Are the words clear? When the sun has risen, I am conscious. This conscious feeling, I never seem to pay attention to. What is its nature? Is it available for experience independent of everything I know that it is attached to? जिसके साथ मैंने उसे जोड़ा है, ये जो मेरा कॉन्शियसनेस है, इस कॉन्शियसनेस को मैंने कभी जाना है कि ये मेरे जुड़े हुए अनुभवों से भी पृथक है. It's independent of it. It is separate from it. What is its nature? How do I know that it even exists without this feeling of I am conscious? Does it even exist without this feeling that मैं conscious हूं? सिर्फ consciousness का experience है क्या? Only consciousness, where there is nothing. I mean, I'm experiencing consciousness. What would that mean? If I just say I'm experiencing only consciousness, what would that mean? I, as an individual, have no knowledge of myself as an individual because I'm only experiencing consciousness. I am experiencing consciousness में जो I है, जिसको ये नाम और रूप है, जिसको एक आइडेंटिटी है, ये I को हटा के इज इट पॉसिबल कि मैं सिर्फ कॉन्शियसनेस को अनुभव करूं? क्या ये है पॉसिबल? क्या ये अपने आप से अवेलेबल है टू बी नोन एंड एक्सपीरियंस्ड? हु इज द एक्सपीरियंसर ऑफ इट देन? हु विल नो इट? कौन कहेगा कि आई एम कॉन्शियस? स्टोन कैनॉट से दैट, क्योंकि स्टोन में अहम वृत्ति, वी जस्ट सेड दैट, जहां अहम वृत्ति नहीं उठी, where there is no aham vritti, we don't find that thing having consciousness. A stone does not claim I am a stone. If it claimed I am a stone, nice it would be, because the stone would want to assert itself. जब हम उससे अपने घर बना रहे होंगे और हम उस पे अपना हथौड़ा रख रहे होंगे, तो स्टोन हिट करेगा वापस, डेयर यू टच मी, बिकॉज विद अहम वृत्ति विल कम सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इट विल ओन एज इट्स ओन. वो अपने स्वभाव को अपना मानेगा. स्टोन का स्वभाव क्या है? हार्ड होना, नॉन फ्लेक्सिबल होना, जैसा है वैसे ही पड़े रहना. The stone, if it had a manifest aham, तो अगर हम उसको उठाएं उसकी जगह से, तो स्टोन क्या कहेगा? Don't pick me up. Don't touch me. How dare you? Because उसकी अहम वृत्ति उसके गुणों से जुड़ी है. स्टोन के गुण से उसकी अहम चेतना जुड़ी है. अहम चेतना मीन्स मेरे होने का अनुभव. अहम चेतना, ये चेतन जो अहम कह रही है,
ये अहम अपने गुणों को कह रही है. What is the stone saying? If the stone was conscious, वो स्टोन अपने अहम को अपने गुणों से जोड़ के अपने आप को असर्ट करती. बिकॉज उसके गुण क्या है? इट इज हार्ड, इट इज नॉन फ्लेक्सिबल, इट इज नॉन मूविंग, it is gray in color, etc. Just imagine these characteristics. What? It is gray in color. It is irregular in shape. It is hard in character. It is non-flexible. It is non-movable. बस अभी के लिए 5 रख लेते हैं. The gray color belongs to the skin of the stone. The non-movable part belongs to the lack of organs of action. नहीं हिलता वो, उसके पास है ही नहीं, वो नहीं हिलना चाहता, नहीं हिलता. Its irregular shape is the shape of the body. वो ऐसे ही अष्टवक्र है, वो उसका शेप ही ऐसा है, वो वही है. And it is hard, means it is non-porous. उसके थ्रू कुछ भी नहीं निकलता. उसके ऊपर बैठ सकता है लेकिन कुछ उसके थ्रू नहीं निकलता. You put water in it, it will slip away, it won't penetrate in it. Now imagine conscious stone. Imagine इस पत्थर में consciousness manifest हो गई. Consciousness manifest होने का क्या अर्थ हुआ? अहम वृत्ति manifest हो गई. अहमनेस. I'm sorry, I'll use all mix up of the words. You'll have to go with the flow of the spirit. अहमनेस. पत्थर में अहमनेस आ गई. मैं भी हूं. पत्थर को लगने लगा मैं हूं. तो when पत्थर says मैं हूं, तो किसको मैं हूं कह रहा है? It is saying to its own qualities, जो उसके अनुभव में है. उसके अनुभव में है कि वो ग्रे कलर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो उसी को अहम कह रहा है. अहम तो generated है. It is already manifest. It's consciousness. If the stone had the capacity, these are very poignant words. If the stone had the capacity to manifest the ahamness, chaitanyam, let me rephrase. If the stone had the capacity to manifest the chaitanyam, that chaitanyam would manifest as aham in association with the characteristics of its own material that it is expressing in. This drishtant so far is clear. इसी को अब हम अपनी तरफ लाते हैं. In a human being क्या हो रहा है? If you remove consciousness from the human being, remove consciousness. Imagine अगर हम स्टोन में डाल सकते हैं तो हम अपने में से निकालते हैं. दोनों करते हैं. स्टोन को कॉन्शियस कर देते हैं, खुद को हम कॉन्शियसनेस हटा देते हैं. The minute I remove the consciousness from my system that I experience today, what happens? What all starts to leave me? I'm a talker, I'm a walker, I'm a feeler, I'm this body, I have this color, I have this gender, I have this race, I have this place, I have this ownership, I have this family, I have this, I have that, I am doing this. ये सब निकल जाएगा. Everything will disappear. Why? Because consciousness is not now manifesting. There is no equipment here to manifest. कोई instrument नहीं है which is able to mirror. It is not able to mirror the consciousness in this combination.
when you switch on the apps, this video apps, और वो शुरू में पूछता है, I find it very fascinating. Pure Vedanta. Everywhere there is nothing but Vedanta. Now when it says your image is mirrored, do you want your image to mirror? I'm sorry, but I started laughing. At first, I didn't know whether I should say yes or I should say no. What does it mean also? You have to learn everything. So it's like, should you mirror the image? And you suddenly realize this instrument has the capacity to reflect your image. What is it reflecting? It is reflecting your entire expression, whatever you are saying, everything it can reflect. It is reflecting. There is a reflecting medium here. तभी वो जैसे हम वीडियो ऑन करते हैं अपना चेहरा दिख जाता है. अरे फैसिनेटिंग. मतलब जो यहां है वो वहां दिख रहा है. क्यों दिख रहा है? Because it has the capacity to, it has the instrument to reflect. This is external. What is it in us? इस शरीर में ऐसा क्या इंस्ट्रूमेंट है which is also reflecting the consciousness? क्या है ऐसा कि it is becoming the reflecting medium, that in that reflecting medium whatever is placed in front is shown. Now in front of the video instrument is the same for everyone. मगर सबके वीडियो के आगे क्या दिख रहा है? The minute I switch on my video, I am perceived. मेरा इमेज दिखता है. And of course, the instrument is beautiful. सबका भी दिखता है. But खुद का इमेज आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है along with everybody else is secondary. But खुद का इमेज रिफ्लेक्ट कर रहा है. What is it over here that is reflecting the capacity for me to say I am conscious? ये विचार की स्थिति है. यहां पे ऐसा क्या है शरीर में, क्या है मैनिफेस्ट कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. It can become a reflecting medium, just as a camera is a reflecting medium. What is the reflecting medium? Here that I am experiencing my capacity to say I am conscious. Because we just did the mental exercise, just for a sake of imagination. Imagine my consciousness is not able to express in this form. एक पल के लिए विचारो, यहां कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट नहीं हो रही है. इसका क्या पर्पस होगा? क्या प्रयोजन है इस विचार का? क्यों करूं मैं ये विचार? हूं तो मैं मैनिफेस्ट. My consciousness is manifest. The prayojan for it is that I am able to understand, try to understand what Shastra tells me. Consciousness is an independent existence other than what I am experiencing it in combination to. What am I experiencing it in combination with? With the qualities of the body, the emotions, the thoughts, the uncertainties. In sabke andar, what is the common thing that is reflected? What is that instrument which is reflecting? Aham, which is further then expressing by identifying with the qualities of the properties of the sharir or whatever we are made up of. Is the example conveyable so far? Now, what has Shastra said here?
ये जो हमको कॉन्शियसनेस है कि नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, इज इट देयर और नॉट? I can only know it when I try to tap it here. If I am awake, I'm experiencing a world. सूरज के उगते मेरी इंद्रियां भी जाग गई, मैं भी जाग गई, और मैं फट 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 like a chicken without a head, I am everywhere because I have things I've identified with. Now, सूर्य अस्त होते ही होते, जैसे जैसे सूर्य अस्त हो रहा है, वैसे वैसे धीरे धीरे there is a withdrawal of the sensory activity. There is a drowsiness that comes up at our own time of whatever. The drowsiness, the minute it sets in, am I conscious? The minute I have slept off, मेरी अहम वृत्ति, is it my experience then? Is it manifest? No. Now, when the aham vritti is not manifest, is consciousness still manifest? Is it still there? Consciousness is still experienced. It's still there. But what happened? The instrument in which it was reflecting, that instrument resolved, withdrew, went back to its source. What is its source? Avidya is the source. Agyan is the source. This avidya is the adhishtan source from where aham vritti comes up. जागती है, let's say जागती है. जब हम सुबह उठते हैं तो क्या हुआ? हमारी अहम वृत्ति कहीं रह गई पीछे और फिर हम उठ गए, ऐसा तो नहीं होता. ओहो, I don't know when my aham vritti is today. Let me look for it. Where did it go? अभी भी सो रही है. I have woken up, but my aham is still sleeping. Never happens. I wake up means the aham is woken up. It's the aham जो जाग गया. अहम जागृत अवस्था में है. ये अहम आज जुड़ गया है इस क्वालिटीज के साथ. अहम is that instrument where the consciousness is reflecting. And this reflection, question that has to be answered or figured out is that without the aham, am I experiencing consciousness? Can I experience consciousness without aham? Aham ke bina, consciousness is experienceable or not? Now, when I say that I have woken up, aham is the instrument. And when I go to sleep, that's what he said in the previous verse, कि जब हम सुषुप्ति में जाते हैं, tat nashe, when the jagrat has taken nasha, the aham is also withdrawn, resolved back. It's like the spider and its web. We've seen that example in the Upanishads. The spider withdraws back its web, creation. And then at a certain time, from its own self, it takes out its own material and creates a web.
Now when it has to, जब उसको डर लगता है या कुछ होता है, वो पूरा वेब अपने अंदर वापस ले लेता है. Fascinating. यहीं से निकलता है और यहीं पे वापस आ जाता है. ये अहम जो उठा है, ये अहम जो व्यापार कर रहा है, अहम जो चल रहा है, फिर रहा है, सोच रहा है, अनुभव कर रहा है, दुनिया को सब देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये अहम जो इतना इन्वेस्टेड है इन लाइफ टुडे, इस अहम के सोते ही my entire perception of life and movement is intangible to me. So here's the Shastra had said, जहां ये अनुभव हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है? Consciousness. Where the consciousness is being experienced, known as I am conscious, in that aham vritti, is this consciousness reflecting? But the nature of the consciousness is that it is free of asang hai ye. Asang hai ye. And that's the beautiful point of discernment. Is the consciousness जुड़ी हुई, युक्त है with I am so and so? क्या ये इससे जुड़ी हुई है? अगर ये जुड़ी होती तो आई एम सो एंड सो जब सो गए तो फिर वो कॉन्शियसनेस भी बाय बाय, बिकॉज वो अनुभव ही नहीं होता, एक्सपीरियंस ही नहीं. देयर वुड हैव बीन अ गैप इन आवर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. अंडरस्टैंड व्हाट इट इज? गैप इन द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. You want to say something? Yes, Hariam Dipti ji. I have a question. Hanji. I'm just confused. You just mentioned that I'm experiencing the consciousness as the rock or the pebble or as what exists in the form of energy, if I can say. Okay. But energy word, of course, we are skipping. But okay, let's avoid. Okay, but since you took the example of the rock, yeah. But the rock and this consciousness, they coexist, right? As Yes. duality. Yes, as duality. Okay. These are two. What I understood from the rock example is that it exists as some form, but it's not the consciousness or the Atma. But these two coexist. Okay. Both are realities, is what I understand. No, in my example, the example was, imagine rock as an existent entity, and rock is the one who's experiencing it. So there are two parallel examples. One is a human example. I am experiencing a rock is not the example. The example is I am experiencing myself, and the rock somehow also has the capacity to experience itself as a rock. और वो कहता है कि मैं rock हूं. That was the parallel of the example. That if the consciousness definitely exists in the rock as existence, but the rock is not claiming itself that I am a rock. So it doesn't even know whether it exists or not. And that's the point. It has a missing equipment where this consciousness is reflecting. And that missing equipment is there in a human being, which is my aham vritti, which is absent in the rock. Rock does not have an aham vritti, aham sense. It does not have a sense of ego. It does not have a sense of identity. That absence in the rock as claiming I am a rock doesn't know that it's gray in color. But I have the capacity
to know that I am so and so. So the parallel is the rock is existent, but for whom? Who knows that the rock is existence? The rock doesn't know that the rock is existence. I know that I am existent and the rock is existent. So the one in whom the aham vritti has arisen, awoken, that aham vritti is the instrument. Very important. ये वही चीज है. Vritti means thought, for simplification. The ahamness, I'll call it the ahamness, I-ness. The ahamness is the exact instrument which is capable of shining. In the next verse he says, prakashaha. Like the सूर्य का प्रकाश होता है, वैसे ये अहम के अंदर जो consciousness express कर रही है, it has the capacity to reflect it. Reflect is as in image showing, like I just said, like now we are all seeing a reflection in that sense, not reflecting back, but reflecting as is. When this becomes the ahamness becomes the medium of reflection of consciousness, now arises the question, is this consciousness only as I experience it? What am I experiencing consciousness as? Whatever I'm doing in the day. And when I've slept off, I've slept and then I wake up again with Anugraha of Ishvara. I wake up again and there is a continuity again of the I. Now here is this window of exploration, intellectual exploration. यहाँ पे जहाँ मुझे अहम का अनुभव ही नहीं हो रहा था, वहां पे अगर ये इंस्ट्रूमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है कॉन्शियसनेस को, तो जब अहम की वृत्ति निकल गई मुझसे, रिजॉल्व हो गई, टेम्पररी रेजोल्यूशन हो गया, तब कॉन्शियसनेस मेरे अनुभव में है कि नहीं है. Who knows this? I know that yes, it is. Why? Because on waking up, my absence of myself as an individual is my knowledge, and my sleeping conclusion that I slept is also my knowledge. Is it clear? Or is it confused? I have a slight confusion. Hanji. That so when I wake up, the vritti also takes over, the thought also takes over. But the existence of that thought is also a reality, right? Yes. So these coexist. At One this as form Right. and the other as formless. Right. They coexist. But we are not denying the existence of the thought or vritti. It also exists. What we are saying is, we only know them as coexistent today. Correct. Correct. The question is, are they coexistent in relation? Always. No. That's the question. Got it. Fair. That's exactly the point of Vedanta. In our experience today, they are coexistent always. But on inquiry, self-inquiry, when we do, that's why he keeps using the word vivekena. थोड़ा सा हम उसको एग्जामिन अगर करते हैं, तो I realize that coexistence is not its reality. One is a dependent reality and one is an independent reality. The dependent reality is coexistent. But is that the fact? Because if it was always coexistent, then this is where my point, the dialogue is continuing. If I sleep, when I sleep, if they were coexistent, what should happen to my experience of life?
अभी तो हम हैं कोएग्जिस्टेंट. ना आई गो टू स्लीप, दे आर कोएग्जिस्टेंट. तो मेरा अहम तो उस टाइम नहीं है, दैट इज इन माई एक्सपीरियंस. तो इफ दे आर ऑलवेज कोएग्जिस्टेंट, what should happen to my experience of consciousness at that time? कैसा होना चाहिए? Is my question clear? मतलब my thought direction clear? कैसा होना चाहिए? What should have I felt? The sleep that I have as an experience that I conclude sleep, वहां पे मुझे क्या होना चाहिए था अनुभव? हम सोच भी नहीं सकते वैसे, क्योंकि हम हैं. The continuity is there. It is like a backdrop which never seems to diminish or disappear. It's an unbroken, available backdrop, always present. But what has happened is that we know it as coexistent is our only sense of reality. और इसको जो मिक्सअप हुआ है, शास्त्रा's usage of the word is it has got mixed up here. What is the mix up? ये जो इंडिपेंडेंट रियलिटी है, जो है अनुभव में, बट ऑन वेकिंग अप, ये जो वृत्ति के थ्रू मुझे एक्सपीरियंस होती है, थॉट्स में ही मुझे एक्सपीरियंस दिखती है, इसको मैं रियल मान लेती हूं. और ये जो एवर प्रेजेंट है, दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस. I have to discern and know whether it is so or not. Shastra says it is so. But मुझे अनुभव में एक दिखती है इंडिपेंडेंट, या एक दिखती है एज डिपेंडेंट. That he said, this mix up is what call it अध्यासा, जो एवर एग्जिस्टेंट है, वो एवर एग्जिस्टेंट को इंस्ट्रूमेंट मिला है फ्रॉम अविद्या एज द बेस. The aham has become the instrument in this little expression of aham. We are very grateful कि अहम उठा, क्योंकि अहम जागा यहां पे. तो अब I am claiming myself to be so and so. Whereas अहम स्टोन में नहीं जागा, वो क्लेम ही नहीं कर पा रहा कि मैं स्टोन हूं, बट यहां जाग गया. So in that little window of that aham, I am conscious, but the error is, just as this aham has come up and is only identifiable by the qualities of the shariras, स्थूल and सूक्ष्म शरीरास, तो अपने अपने गुणों के साथ जुड़ के ही वो अहम का अनुभव होता है. तो गलती हो जाती है, गलती एज इन नॉट द लौकिक वे ऑफ गलती, एरर इन जजमेंट हो जाता है कि कॉन्शियसनेस भी ऐसी ही है. कैसी है कॉन्शियसनेस? इफ द स्टोन इज एक्सप्रेसिंग कॉन्शियसनेस, स्टोन कहेगा कॉन्शियसनेस इज ग्रे. मैं कह रही हूं कॉन्शियसनेस इज limited to this body. I know that. He says in the, what verse did we do? 22nd verse. This mix up राग द्वेष आदि सुख दुख, जिसको हम जीवन कह रहे हैं. हमारा जीवन क्या है आज? जन्म से मृत्यु तक सिर्फ इन अनुभवों का एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, द एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी, प्लुरलिटी.
That experiential world is all that I call as real. He says they are only true, सत्य है, स्थित in the buddhi, in the antakaran. That buddhi would mean antakaran, and antakaran means mano buddhi chit ahankar, and that ahankar means aham vritti. If you keep this aham vritti को रखते ही सुख दुख आदि ये सब इस अंतकरण में मैनिफेस्ट हैं, क्योंकि जब अंतकरण रिजॉल्व हो गया, सुषुप्तौ नास्ति. In the sushupti, I don't have the aham vritti. It's not there. Then all the sukha dukha that I'm experiencing in the world today, ये भी नहीं है वहां पे. They're also resolved. I'll repeat this. This sukha dukha, let me start from the very beginning again. I am awake. When I'm awake today, it is in this instrument of aham that this consciousness is able to shine forth. It reflects. वो अपना स्वरूप दिखाती है. That it is ever existent and that it is asanga. Next verse he's going to say स्वरूप का स्वभाव क्या है. That it is ever present. वो ये चैतन्यम ही है. बट आज क्या हो रहा है, अविद्या से अहम उठी और ये चैतन्यम अब सिर्फ अविद्या के अहम के थ्रू ही मुझे जानी जा रही है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो अहम है ये तो अपनी एक्सटर्नल प्रकृति के साथ जुड़ा है. अविद्या में किसके साथ जुड़ा है? गुणास के साथ जुड़ा है. स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर इस अविद्या, इन्हीं के साथ जुड़ा रहता है. इसका वननेस इन्हीं के साथ है. Like two sides of a coin. Aham is not experienceable to us as independent without these qualities that I call myself as I. That this is experienced. I experience the sukha dukha raga dvesha adi, जिसको मैं जीवन कह रही हूं, which is actually also supported or backed up by the consciousness. But my attention is only on the sukha dukha adi. इसी को मैं जीवन मान रही हूं. इस जीवन को प्रकाशित क्या कौन कर रहा है? इस सुख दुख आदि को प्रकाशित कौन कर रहा है? How do I know I have sukha and dukha? सुख आया, दुख गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसको जो light of knowledge that is coming through, that is raga dvesha adi that I'm experiencing as the world, they are only buddhi sthit, antakarana sthit, aham sthit. Because when the aham takes laya, my entire sukha dukha adi also takes laya. नींद में मेरे ये सारे वरीज गायब हो जाती है. For some time I have no concerns, no worries, no struggles, no wants. I am freed of, we say that. I am freed of everything. All relations. I'm freed of wants. I'm freed of hopes. I'm freed of unhappiness. I'm freed of sadness. I'm freed of depression. I'm freed of anxiousness. I'm freed of fear. I'm freed. But how do I know I was free there? When I was free, I am free. I am not able to recognize that freedom is my own experience, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस का ही स्वभाव है, वो उसका स्वभाव है. ये इन सबसे असंग है, and it remains असंग.
So while it is seen through the medium as reflecting aham, the reflection itself is clear. Like we've done the examples in the past, the sun is clear of the reflection in the water. It has nothing to do with the reflection in the water. But seeing the reflection in the water, if the waves are there in the water, I feel the sun is also, or the moon, whichever, is also, वो भी लहरों में है. क्योंकि रिफ्लेक्शन कैसा दिख रहा है, वैसा ही मेरा कंक्लूजन बनता है. If I am not able to trace it to its source, mark the words. If I'm not able to trace the source, the reflection to the source, the moon that I see here or the sun that I'm seeing in the reflection is actually a sang to the reflected medium. It is not one with it. They are not coexistent. If I'm not able to recognize that, then whatever is happening at the level of the reflection, that alone is real. So Shastra says, when you sleep, and जब ये सब अहम वृत्ति आपकी रिजॉल्व हो जाती है, तब entire Jagat and its experience has also resolved. But Atma is not resolved. The consciousness has not resolved. Because consciousness was not arising with Aham, it is not dependent on Aham. On the contrary, it is the Aham which is dependent on the consciousness to know itself. If the Aham vritti is not there, the consciousness is not expressing, but that the consciousness is independent of the Aham vritti, and Aham vritti can be destroyed, completely destroyed, in knowledge of Asanga consciousness Atma. जब ये जाना गया तो ये जो रिफ्लेक्टिंग मीडियम टूट भी गया, द पूल ऑफ वाटर इन अ वेसल जिसमें द सन वाज रिफ्लेक्टिंग, जब तक मैंने इसी को सन माना, यही नजर थी मेरी और मैंने इसी को सन माना, तब तक मुझे सन का असंगत्वम नहीं दिख रहा. But when I keep tracing it, is the sun a part of this reflection? Question. Am I clear? नहीं समझ में आ रहा? When I'm seeing the sun in the pot of, say there is a pot of clay and there's water in it and the sun is reflected in it. Now when the sun is reflected in it and मैं बस उसी को देख रही हूँ. Imagine a small child. जब वो उसको देखता है तो उसको sun part of that vessel में दिखता है, उसी का हिस्सा दिखता है. उससे पूछो सूरज कहाँ है, छोटा बच्चा होना चाहिए, उसको उसी में दिखता है, उसके लिए वो एक है. That you have to appreciate this. If you don't, then the rest of the example will not make sense. What it is seeing in the water is the sun. It does not know where the sun really is. It doesn't know the true nature of sun. जब वो देख रहा है पॉट में, उससे पूछो सूरज कहाँ है, कहता ये रहा, ये रहा, ये सूरज है. तत्नाशे, अगर आप उसका नाश कर देते हो पॉट का, टूट गया गमला, वो जहां पे मिट्टी का पॉट था और वो टूट गया, पानी बिखर गया, अरे सूरज कहाँ गया, गया, सूरज भी चला गया. तत्नाशे सूरज नाशः, ऐसा कौन समझेगा? I think we'll hit the nail on the head if we get this.
कौन समझेगा कि जब रिफ्लेक्शन टूट गया, मतलब मीडियम टूट गया, तो सूरज भी टूट गया, जब पॉट टूट गया तो सूरज भी गया, डिस्ट्रॉयड। ऐसा कौन सोचेगा? अविवेकी, बच्चा, बच्चा, अविवेकी, जिसको ये नहीं दिख रहा कि सूरज इसका हिस्सा है ही नहीं, वही अविवेकी है, वही बच्चा है। दैट इज व्हाट शास्त्र कॉल्स ऑल ऑफ अस बालवत। एक और वर्ड बोलते हैं ना शास्त्र हमको, टू से दैट वी आर लाइक चिल्ड्रन। मूढ़ तो है ही, बट देयर इज अनदर वर्ड, बालवत। वी आर लाइक चिल्ड्रन, वी आर इग्नोरेंट चिल्ड्रन, वी आर बालवत। हमको आज यही कॉन्शियसनेस दिखती है, दिस इज व्हाट आई एम। शास्त्र सेज बालवत। There's another word it uses, I've forgotten for now. That you are seeing it only as existent here. तत्नाशे, जब ये शरीर का नाश होता है तो हमें क्या लगा? कॉन्शियसनेस गई, आत्मा गई, उसका नाश हो गया। This is exactly as a child says when it sees the reflection of the sun in the pot and it says सूरज यहाँ है, and वो उससे खेलता भी है, ओ देखो देखो वेव, सूरज है, उसका कंक्लूजन ही है कि सूरज यहाँ है। बट देन धीरे धीरे जब adult, who's the adult here in the example? The शास्त्र विद्या, वो जब हमको दिखाती है, वहां देख, लाइक द चंद्रशाखा न्याय, वो वहां देख, सूरज तो वहां है। तो जब पॉट टूटता है तो उसको क्या होता है? बच्चे को दुख होता है। जब पॉट टूटेगा तो उसको दुख होगा, सूरज के ना होने का दुख होगा? नहीं होगा। क्यों? बिकॉज उसको सोर्स पता चल गया, सूरज तो वहां है, यहां था ही नहीं। तो वो क्या करेगा? एक और पॉट ले आएगा, वो एक और पॉट लाके दिखाएगा, अरे देखो सूरज अब इधर है, यहां से गया यहां आ गया। एंड दैट इज व्हाट शास्त्र सेज, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। व्हाट डज ही से इन द गीता? व्हेन दिस बॉडी गोस यू एंटर अ न्यू बॉडी। अब वो रिफ्लेक्शन, एक अहम का रिफ्लेक्टिंग मीडियम इज द अहम। अविद्या जब तक है तब तक क्या होगा? ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम विल कंटिन्यू। व्हेन दिस बॉडी गोस, in a new body it will emerge, and now you will claim that to be me as real. यही मैं हूं, यही सत्य है, this is me, and you will keep looking at the reflection as real. But is that its swabhav? That's what he says from 23rd verse. He's asking us to question it. आत्मा का स्वभाव क्या है? अगर ये अध्यारोपित है entirely, if we've understood the concept of adhyaropan, if this aham is entirely an adhyaropan on atma, due to atma, because of atma, it is an ignorance that we are doing this, or it is expressing itself, I don't know the right words to say that. It is an ignorance that one is expressing aham as being conscious. aham ही चेतन है। ये जो मेरी सोच है कि मैं ही कॉन्शियस हूं, और उस मैं ही कॉन्शियस में इतना अल्पम छुटकू बुद्धि है हमारी, लिटिल एक्सप्रेशन ऑफ हु आई एम, दैट aham vritti expressing itself here, that this atma is not just restricted to the reflection in this medium of aham, that it is independent. To say that are the next verses. We'll just touch upon the 23rd verse. Just as, so what is the nature of this atma? It says, just as prakashah arkasya. अर्कस्य सूरज, सूरज में जैसे प्रकाश है, क्या आप उसको भिन्न कर सकते हो?
सूरज को और प्रकाश को। तो यस्य शैत्यम, जल में जैसे शीतलता है, क्या आप उसको अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। अग्नेः उष्णता, अग्नि में जैसे गर्माहट है, क्या आप उसको अलग कर सकते हो? Fire and heat, can you separate them? If you remove one, the other will not exist. If you remove heat from the fire, fire cannot exist. You know? That these are dharmas of the entity. उसी की क्वालिटी है, वो उससे भिन्न नहीं है, वो अलग नहीं है। गर्मी उसका कैरेक्टर दिखता है, लेकिन वही अग्नि है, उससे अलग नहीं है। That's the point. They're not two things. Fire has heat नहीं है. Heat is fire. Sun has light नहीं है. Light is sun. Sun is light. When this is known, इसी को स्वभाव कहते हैं। उसका स्वभाव ही ये है, सच्चित आनंद, नित्य निर्मलता आत्मनः. This Atma is of the nature of Sat Chit Anand, and it is Nitya Nirantara. Purnam iti arthaha. It is Purnam. Nityam means Purnam. And Nirmala, शुद्ध है ये। शुद्ध का मतलब किसी से मिलावट नहीं है, ये अहम से मिला नहीं है। It's a very profound verse. Next two verses are very profound. ये अहम से मिला, यही वेदांत है, यही शुरू होके खत्म हो रही है। अहम से ये मिला हुआ नहीं है। It is शुद्ध, it is निर्मल. That is the nature of this consciousness. Know it to be Atma Chaitanyam, Anandam Satchitanandam, Nityam Nirmalam, Kutastha. Other places it will say all this. That means when I am able to discern what is of the nature of Satchitananda and what is the nature of Indriya Janat Sukham. जब मुझे ये समझ में आता है कि एक एवर प्रेजेंट है, सत है, वही चित है और वही आनंद स्वरूप है, वही नित्य है और वही निर्मल है और वही है। वो किसका स्वरूप है? वो ये जो अहम कह रहा है, वो आज अहम जो इन क्वालिटीज के साथ जुड़ा है, बुद्धि आदि के गुणों के साथ जुड़ा है, ये अहम, ये गुण सारे अहम का स्वभाव नहीं है। अहम का स्वभाव ये आत्मा का स्वरूप है। Last sentence clear? What is it? That is, let's start from the beginning. Concluding now. What are we experiencing? Let's borrow the words. Coexistent reality. We are experiencing aham and jagat. And aham mein, how do I know I am? There is the presence of consciousness. वो तो है ही, otherwise how can I know? The stone has no assertion of its individuality. वो भी तो है, but stone नहीं कह रहा कि human है। अरे देखो ये human ने क्या बर्बाद कर दिया हम लोगों को। Stone नहीं कह रहा, human कह रहा है ये stone है, पटको मारो जो करना है, because it will not retaliate back. So who is of the higher order of reality in that sense of hierarchy? Human being utilizes, that's the nature of life. You utilize the lower forms
which are less expressing the Aham Chaitanyam. Human being has the maximum expression of Aham Chaitanyam. मगर ये अहम चैतन्यम हमारा इन गुणों के साथ जुड़कर इसी के जो कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट हो रही है इस मीडियम में, हम उसको इसके साथ जुड़ के एक ही समझ रहे हैं, मगर ये एक नहीं है, भिन्न है। कॉन्शियसनेस ऑफ द सच्चिदानंद नित्य निर्मल स्वभाव। ट्रूली स्पीकिंग, ये जो अहम का अनुभव है जो इन गुणों के साथ है, वो भी वो सत्य नहीं है। ये अहम जो रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्टिंग मीडियम का स्वरूप इस सच्चिदानंद, और स्वभाव उसका क्या है? ये गुणों के साथ जुड़ के जो आपका कॉम्पोजिशन ऑफ सत्व रजस तमस है, जो आपके इग्नोरेंस से उठ के अहम बना है, यही आपका स्वभाव है, यही हमारा नेचर है, यही जिसको हम कहते हैं दिस इज हु आई एम। When we say this is who I am, take me or leave me, मैं तो नहीं बदल सकती अपने आप को। हम किसको कह रहे हैं ये सब? ये हम अपने स्वभाव को कह रहे हैं। ये स्वभाव क्या है? ये स्वभाव हमारे गुणों के हैं, और वो हमारी अविद्या से उठे अहम के साथ जुड़े हैं। लेकिन अहम हमारा रिफ्लेक्टिंग मीडियम है जो एक्चुअली कॉन्शियसनेस आत्मा को, नाउ लेट मी ब्रिंग इन द वर्ड आत्मा, यही आत्मा को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं तब जान पा रही हूँ। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। मैं जान पा रही हूँ कि मैं कॉन्शियस हूँ, मैं बन रहा है। वो जो मैं बन रहा है वो मेरे अंतःकरण की क्वालिटी, सूक्ष्म गुणों के कारण उसमें रिफ्लेक्ट हो पा रहा है आत्मा चैतन्यम, जिसको ये आज मिश्रित दिख रहा है कि मैं ये हूँ, मेरे स्वभाव ये है। वो मेरे स्वरूप को नहीं समझ रहा। मेरा स्वरूप सच्चित आनंद नित्य निर्मल है। मेरा स्वभाव है कि मैं आज जन्मी हूँ, मरी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मुझे ये चाहिए। ये मेरे गुणों के स्वभाव है, ये बदलते हैं, ये बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलेगी। That will remain supportive of whatever comes over it. Clear? थोड़ा बहुत? So, next verse he will say, we are just building it up now to take up next time. Next verse he will say, if Atma is Satchitananda, then how, like I just said today, how am I knowing that I know? मैं जानता हूँ, ये सब मैं कैसे कह सकती हूँ? That duality that I'm experiencing as real, वो कैसे संभव हो रही है? अगर आत्मा अविकारी है, doesn't participate in any of the sun reflected in the water is not participating, the original sun is not participating in any of the waves of the water. वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो खाली दिख रही है, but it has no doing in the reflection. In the same way, अगर आप कहो कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और पार्टिसिपेट ही नहीं करती किसी चीज में यहाँ पे, तो ये मैं जानता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीती हूँ, मैं ये सब, ये व्यवहार में जो ये एकता हमें दिख रही है, जो आज हमने पूरी क्लास इस पे ली है, नेक्स्ट वर्स इज गोइंग टू कंटिन्यू इनटू, उसको अलग क्या है? It's continuing to say the same thing that today I have kind of summarized it, keeping the next verse also in mind, कि जो ऐसा सोचे कि अगर आत्मा अविकारी है तो मैं जान रही हूं, मैं ये सारे विकारी का ज्ञान, ये विकारी है ना, what does विकारी means? Changing. So that I am sleeping, that I've grown up, all these thoughts are changing. How do I get to know this if Atma is avikari? ये कैसे जानी जा रही है? That he will take in the next verse. So we'll conclude here. After that, if there's a question. Om
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ शान्ति शान्तिः।